मैं कोई और एक और गेम खेल रहा हूँ। कंट्रोल गुड। आज मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा उसकी। हाँ, दो गली पहुँच गया था ना। बाय। यहाँ से खत्म हो गया।
क्या दे रहा है? हेलो, 1 बजे करूँगा अभी 5-10 मिनट में। पर बताते क्यों नहीं? हेलो, समझ नहीं आ रही। दीदी मैं स्ट्रीम करो तो प्लीज कुछ बोलना मत, ठीक है? ठीक है, एक सेकंड। दीदी प्लीज 0 आवाज करना, बहुत मेरे यार प्लीज, क्या कर रहे हो? नहीं आ रही इतनी आवाज। अरे मेरे इसमें आएगी ना। इसकी नहीं आ रही आवाज। क्यों? पहली बात ये हॉरर गेम नहीं, मैं चीजें लाऊंगी, मैं इधर ऊपर ऐसे ऐसे करूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, ये तो तेज आ रही है ज्यादा। कहने की आवाज नहीं आनी चाहिए ना कुछ, उससे मतलब नहीं है। हेडफोन्स पहने हैं हमने, इतनी दूर तक इससे यहाँ ना इतने में ट्रैवल कर रहे हैं ना, जो साउंड उसके पीछे फैन की आवाज आ रही होगी इतनी तेज। तो मुझे कैसे आ रही? लॉजिक लगाओ। मुझे कैसे आ रही? आपको बहाने चाहिए ना। हाँ बहाने चाहिए, पता नहीं।
हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो आज हम एक बार और खेलने वाले हैं हॉरर गेम, ठीक है। सो इस गेम का नाम है कंट्रोल, और मुझे नहीं पता ये हॉरर है कि नहीं, पर ये हॉरर लगती है तो मैं खेलता हूँ। और मैंने ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेली है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी गेम नहीं खेली। मैं लाइट ऑफ कर दूँ? शक्ल तो नहीं दिखा रहा अपने। This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know. मैंने लाइट भी ऑफ कर दी। I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible. We're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. Then the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? शिफ्ट से नॉर्मल है सारे, जैसे शिफ्ट से तेज वर्किंग होती है, थोड़ी स्लो होती है, सेम ही है सब कुछ। ये इसकी शक्ल थोड़ी जमी, और तो ये सारा वर्किंग है। और हम इस बिल्डिंग के अंदर आए हैं, तो इस बिल्डिंग के अंदर ही कुछ होना है, तो मुझे बाहर जाना है, बाहर नहीं जा सकते। अरे एक सेकंड के लिए मुझे लगा ये कोई GTA 5 जैसी वर्ल्ड है, यहाँ पे हम घूम वगैरह सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। एक बार सोचो GTA 5 अगर हॉरर गेम रिलीज की GTA 5 वर्ल्ड में, तो क्या होगा। इंटरनेट और हाँ,
saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. सील इस हमने ड्रीम्स में क्वेश्चन का एनिमल दिखता है जिसका नाम सील है वाह ये कौन है भाई ओए तो वो वही वाला बंदा है ना जो आया था शायद से पिक्चर में या है नहीं है वही है ना ये कौन है ये तो शक्ल ही नहीं दिखा रहा ये कौन ये भी वही है ये दोनों सेम है ये अलग है कुछ मिस्ट्री विस्ट्री तो सॉल्व नहीं करनी है इसमें पता चले कोई मिस्ट्री वगैरह है मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है टॉयलेट गाइस बस ओए ओए ये था ये पहले था ये वाला रूम देखा नहीं? Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. शिफ्ट ना ही दबाऊं तो बढ़िया है ये ज़्यादा जल्दी जा रहा है तो वो जी से खुलता है क्योंकि जी से इन्वेंट्री है बोरिंग इसके अंदर यार ये पता नहीं बुक्स वगैरह उठाने क्या पढ़ने जाऊँ मैं अभी ये कौन बोल रहा है ये कौन है भाई कहाँ से आ गया ये? Hello? ओए तो वही है ना तो पिक्चर में था हाँ Hey, excuse me. जंप स्केयर आएगा भाई There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, hell of it. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you halt. क्या रहा है ये I've done enough night shift क्या loader jobs to know it makes us come off इसे मार weird. सकते हैं वेलकम Ahti टू the द janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. मारना मुझे Think इससे about स्कोप it. करते हैं मारेंगे या फिर No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. आगे जाने के वही देख यहाँ पे लाइट नहीं है उस साइड पे लाइट है इस साइड में ये देख लो। अरे बात है, ये सेम नहीं है हमारी चीज़ में। मुझे लगा उसी जगह पे The cell and the poster. I was 11 years old the first time Oh, I saw the behind the elevator. poster. Oh. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? नो
अब कुछ होगा नहीं। अच्छा ये प्रोड्यूस वगैरह दिखाना है इसके भी करो। कंट्रोल, ओ माय गॉड, कंट्रोल कंट्रोल। Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. ओ तो इसका ब्रदर है और 17 साल हो गए इन लोगों ने इसका ब्रदर को किडनैप वगैरह किया हुआ है। उसे ढूंढना है। ये क्या है? अलार्म अलार्म क्यों बज रहे हैं? चोरी हुई थी क्या इधर? यहाँ पे बज रहे थे। ये इरिटेट करते कभी और भाई कुछ भी नहीं है भाई इधर। हाँ ये कुछ है यहाँ पे यार। सीट से उठा कर Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? ये वही है क्या? ये Something's outside. फोटो Was coming here a mistake? गन उठाने को कह रहे हैं। Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. और तो वो ये भी अपने आप को मार लेगी वैसे से। Look at this place. Where am I? कहाँ पे आ गए? यहाँ पे इतना ब्राइट हो गया, इतनी ब्राइटनेस जिंदगी में नहीं देखी है। इन शॉर्ट नॉर्मली ऊपर ऊपर जाना है। आना है वी दबाऊंगी ओ भाई भाई ये तो कतई टेकन बन गया। मॉर्टल कॉम्बैट में हूँ मैं। मॉर्टल कॉम्बैट बन गई। ओ भाई ओ भाई The same gun. गन ही नहीं पकड़ी जा रही इससे। ये क्या जाएगी आगे? Okay, now I have a gun. ये क्या है? मारो ही ना। Wow, such a good aim. Such a good aim. Wow, what a aim. I am. Oh, तो
अभी आधी बुलेट खत्म हुई थी, पूरी हो गई। मैं क्या बोलूँगा तुम, शूटिंग है क्या? वो तो एमओ खुद होती है, ये वी से मरता शायद। हाँ इतने से मरता। अभी क्या है, नीचे ही रह गया। Enemy drops health elements. Oh, health. Oh, मैं health ले लेता हूँ। वो तो नीचे गिरेगा, तो health नीचे होनी चाहिए। In short, is shooting it. मर नहीं गया था। ओके, वो नहीं था ये। An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. Oh. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Oh, तो मतलब इस गन में Things have quieted कोई down पावर outside. है। देखो, मैं 1 बुलेट कर दी तो अपना बढ़ जाता है। टैग तो क्या? ओ, टैग से मैप है और ये बंदा की मेमोरीज से आ रही है। ओ भाई, दिक्कत है। वो डेड बॉडीज हैं। You can't let this happen. 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 You stopped it. ये क्या है? Thank you. That was horror. गंगा कहते हैं। ओ भाई हेल्थ खत्म कर दे। याद भी नहीं बोला जो और हेल्थ चाहिए। ये 50% से भी कम है। The hotline. Secure line of communication. ये क्या है भाई? Guidance. Reach the hotline. मैं प्रोजेक्टर्स कहाँ है? The hotline, says the dead man. Okay. वो तो इसके माइंड में है सारी चीजें। देखिए डेड में। ये क्या है? मारना है? ओ भाई भैया मैं एक भी दाम का सपोर्ट भी कर देता हूँ। I'm a pro gamer.
भाई कर लिया 4 डैमेज। भाई मैं मरने वाला हूँ। भाई क्या है, मैं मरने वाला हूँ बहुत बुरा है। ये मरेगा लोग क्या? लोअर जाओ। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद होगा। भाई अब जैसे कम है कहाँ जा रहा हूँ मैं मरने ही वाला हूँ। और ओह ये हेल्थ दिखती है। हेल्थ कहाँ कहाँ पर है? कोई हेल्थ नहीं जा रहा। नहीं How is memory? ऐसे बंद कर देगा ताकि एनिमी ना आ पाए हमारे पीछे। विंडो से बाहर जाती है ना, बाहर कैसे जाना है? ये यही से निकलेगा। तो एक टाइप का बंकर है। यार खोल ही दो भाई। डराता नहीं है देखिए। रेड लाइट The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss और ये तो सीलिंग के अंदर घुस burrowing गई। into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. ये क्या जगह है? मैं मर गया। तो मैं मर गया हॉरर गेम में। भाई कैसी हॉरर गेम? शूटिंग स्लैश हॉरर is equal to this. Okay, तो फाइट मुझे लगा होता मुझे बस tried to invade me earlier. चलो मरने का कुछ तो फायदा हो। Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Correct. It's our enemy. Oh wow.
वही डैमेज की तरह से है। Must cleanse control points. भाई An enemy. Corrupt. यार Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. ओके ये क्या था? Holy shit! You did it! We did it! वो आउटफिट्स भी है। Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? तो यहाँ पे आके आप आउटफिट्स बदल सकते हो खुले में, बिल्कुल पूरे के पूरे एरिया के बीच में बदलना आपको, मतलब Please, talk to me. ये भी जगह है We छुप saw सकते you हो। deal with the ये भी यहाँ भी जा Earth सकते हो। agents. नहीं यहाँ पे ये भी नहीं। मेरी हेल्थ बार भी चली गई, फाइट खत्म हो Is गई। it safe to come out? क्या है? हाउस मेमोरी जी कहाँ पर है हाउस मेमोरी? मिशंस को छोड़ो, हाउस मेमोरी हाउस मेमोरी मिशंस क्या है? वेलकम टू द ओल्डेस्ट हाउस, ये तो हो गया। मिशंस क्या है? अब क्या करना है? मुझे वासना मिल गई। अब मुझे देख के मुझे काम दे रहे हैं। सीधे दे रहे हैं। वो कैमरा है। तो बुक तो बता दे रहा हूँ मैं पूरे के पूरे। ओ हाँ, इसमें मेमोरी का कुछ मिलता है ना, इसमें कोई मट्टी से मिलती है। ये कितने ओए ये वही जगह है। ओ मैप, ओ हाँ मैप पे देखना ना काफी जगह। बोर्ड रूम में मैं गया था, वो वही वाला था। डेड बॉडी कहाँ पे गई? डेड बॉडी का आप होगा, डेड बॉडी ही था। ये मैं आशा मैं कहाँ पे नहीं गया, मुझे देखना बंद है तो काफी जाना यही से
नहीं। ओह ये रहा। ये तो बड़ी मैं पूरे टाइम खोले रखता हूँ। बहुत तरीका है। कहाँ जाना है? ओह डायरेक्टर के ऑफिस से ओ हाँ मैं अपने उससे मैं बी से तोड़ सकती हूँ। इनका एनिमेशन अच्छा है। वैलोरेंट में आऊंगी तो मैं पक्का से ले लूँगा शेरिफ के उसमें। सब ब्रो कैसे है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? सोच रहा हूँ मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा। ओह एक सेकंड, तो पहले दो लॉन्ग था, मैं सीधा इधर ही आ जाता। I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. Oh. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Hello. I didn't. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. जो अब गायब हो गई. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that?
And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director. How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... No value. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Oh, तो ये हाँ ये लॉकडाउन में रहते थे। ये बस पावर से हुआ क्या? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I want to tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. A few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. ये तो मूवी लग रही है भाई स्टोरी They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it.
More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. वो तो ये टेलीफोन है, इस तक जाना है, तब कैसे जाएंगे? I know this is all new to you, so the hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. कहाँ जाना है हमें भाई? कहाँ? There it is again. Our welcome message. मार कैसे रहे थे? जाना चाहिए। ये क्या है? Yes, it's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that.
खेल रहे गेम। आई एम ओवर। मैं आज बस इतनी स्ट्रीम करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर। विश मी गुड लक।